Hello everyone. Today our topic is DNS cache poisoning. To understand DNS cache poisoning, first we will understand what is DNS and how it works. DNS stands for Domain Name System and it translates domain names to IP addresses. जैसे हम अपने वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं तो उसमें किसी भी वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं जैसे google.com, wikipedia.com। तो हमारी मशीन को सिर्फ लॉजिकल लैंग्वेज समझ में आती है, तो उसे उस हमें google.com पे लेके जाने के लिए वेब ब्राउजर को आईपी एड्रेस चाहिए, google.com का आईपी एड्रेस चाहिए। बट हमने वेब ब्राउजर में क्या टाइप किया, google.com, पर हमें आईपी एड्रेस नहीं पता। पर अगर उसके पास आईपी एड्रेस होगा वो तभी हमें google.com पे लेके जा सकती है। तो डीएनएस क्या करता है, डीएनएस हम वेब ब्राउजर को google.com का आईपी एड्रेस रिजॉल्व करके देता है, इसलिए हम डीएनएस यूज करते हैं। दूसरा कारण डीएनएस यूज करने का ये है कि आईपी एड्रेसेस डायनेमिक होते हैं, स्टैटिक नहीं होते। और डीएनएस आईपी एड्रेस रिजॉल्व करके कैसे देता है वो हम इसके बाद देखते हैं। जैसे डीएनएस हायरार्की है, सबसे पहले हमारे पास रूट सर्वर होता है। जो ये डॉट है वो रूट सर्वर को डिनोट करने के लिए लिखा हुआ है। और हमारे पास ग्लोबली 13 रूट सर्वर्स होते हैं और वो आगे टॉप लेवल डोमेन्स सर्वर्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि .edu फॉर एजुकेशन, .com फॉर कमर्शियल, .gov और बहुत सारे होते हैं जेनरिक सर्वर्स एंड कंट्री सर्वर्स जो कि टॉप लेवल सर्वर्स में आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर्स। ये सारे अथॉरिटेटिव सर्वर्स हैं, इनमें जो हमारी वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस होता है। सो चलिए हम देखते हैं कि डीएनएस आईपी एड्रेस को रिजॉल्व कैसे करता है। ये हमारा यूजर है और उसने वेब ब्राउजर में वेबसाइट का नाम डाला www.example.com और ये हमारा डीएनएस रिजॉल्वर है। इसे हम लोकल कैशे भी कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर होती है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमने example.com पहली बार वेब ब्राउजर पे टाइप कर रहे हैं, पहली बार example.com खोल रहे हैं, तो ये इसका आईपी एड्रेस डीएनएस रिजॉल्वर में नहीं सेव होगा, क्योंकि इसमें उन्हीं वेबसाइट्स के आईपी एड्रेसेस होते हैं जो हमने 1, 2 या 3 बार या फिर जो रिसेंटली विजिट किए होते हैं। जैसे अगर हमने google.com 2 मिनट 10 मिनट पहले खोली थी तो अब फिर से खोलने लगे हैं, तो वो उसका आईपी एड्रेस डीएनएस रिजॉल्वर में होता है। तो इससे हमें ये फायदा होता है कि जब हमारी रिक्वेस्ट डीएनएस रिजॉल्वर को अगर हम google.com पहले google.com टाइप करेंगे तो वो रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस रिजॉल्वर को कि उसका आईपी एड्रेस दो। अगर हमने google.com 10 मिनट पहले खोली होगी या तो उसका आईपी एड्रेस डीएनएस रिजॉल्वर में सेव होगा, तो डीएनएस रिजॉल्वर यूजर को आईपी एड्रेस दे देगा। बट अब हम यहाँ पे दूसरा केस ले लेते हैं कि example.com हम ओपन कर रहे हैं और हम example.com पहली बार ओपन कर रहे हैं, तो उसका आईपी एड्रेस डीएनएस रिजॉल्वर में सेव नहीं है। तो पहले हमने यहाँ पे example.com लिखा और उसको फिर रिक्वेस्ट भेजी डीएनएस रिजॉल्वर को, और हम इसको पहली बार ओपन कर रहे हैं तो इसमें इसका आईपी एड्रेस सेव नहीं है। तो ये हमारी डीएनएस रिजॉल्वर आगे रिक्वेस्ट भेजता है रूट सर्वर को भेजता है। रूट सर्वर अब हमारा जो वेबसाइट का आईपी एड्रेस रिजॉल्व जो है राइट साइड से होता है। डीएनएस रिजॉल्वर देखता है सबसे पहले क्या है, .com। रूट सर्वर देख रहा है .com, तो रूट सर्वर यहाँ पे रिप्लाई भेज रहा है कि आप .com वाले सर्वर पे जाओ डीएनएस को। तो डीएनएस ये रिप्लाई एक्सेप्ट करके 4th स्टेप पे .com वाले सर्वर पे जा रहा है और .com वाला सर्वर डीएनएस को रिप्लाई भेज रहा है कि आप रूट 53 नेम सर्वर पे जाओ। फिर 5th स्टेप में डीएनएस रिजॉल्वर रूट 53 नेम सर्वर में जाता है और यहाँ पे example.com का आईपी एड्रेस है। तो ये वाला सर्वर हमें आईपी एड्रेस देता है example.com का,
और इसका आईपी एड्रेस है 192.0.2.44। सो इसको डीएनएस रिजॉल्वर को example.com का आईपी एड्रेस मिल जाता है और डीएनएस रिजॉल्वर इस वेब ब्राउजर को इसका आईपी एड्रेस देता है, तब जाके वेब ब्राउजर हमें example.com वेबसाइट पे लेके जाता है। सो ये था कि डीएनएस वर्क कैसे करता है। Imagine that before graduating, you change out all the room numbers on your campus so that the new students who don't know the campus layout yet will spend the next day getting lost and showing up to the wrong classrooms. Now imagine that the mismatched room numbers get recorded in a campus directory and they keep on heading to the wrong room until someone finally notices and corrects them. DNS cache poisoning attack is the act of entering false information into a DNS cache so that DNS queries return an incorrect response and users are directed to the wrong websites. It is also known as DNS spoofing. Here, IP addresses are the room numbers of the internet enabling web traffic to arrive in the right places, and DNS resolver caches are the campus directory, and when they store wrong information, traffic goes to the wrong places until the cached info is corrected. So DNS resolvers don't have a way to verify the data in their caches. Incorrect DNS information remains in the cache until the time to live expires or someone manually removes it. In this example, the client is requesting for a website and the attacker injects a fake DNS entry. So the client is redirected to the fake website instead of the real website. Similar example. So the methods for DNS spoofing or cache poisoning attacks are man-in-the-middle and DNS server hijack. In man-in-the-middle, an attacker steps between your web browser and the DNS server to infect both. A tool is used to do this, and in DNS server hijack, the criminal directly reconfigures the server to direct all requesting users to the malicious website. We can prevent DNS cache poisoning attack by these following methods. First, never click on a link you don't recognize. Regularly scan your computer for malware. Flush your DNS cache to resolve poisoning and use VPN, that is virtual private network. Thank you. Hello everyone, today we will see how to perform DNS cache poisoning attack. And for doing this attack, I have already installed Kali Linux and the virtual box. And we will use the ettercap tool, which is already available in the Kali Linux by default. And we will perform the attack on the host machine. So host machine will act as a victim. So let us see how to do this. Now open the command prompt in the Kali Linux to check the IP address of the Kali Linux, and we will type sudo ipconfig to check the IP address of the Kali Linux. Here the IP address is 192.168.1.10, and now we will open the nano text editor, and here go to the at last, and here we will type the IP address of the Kali Linux, which we have already checked. So here asterisk means whenever you will type any URL of the website, you will be redirected to that page. Now start the Apache service. To start the Apache service, we'll type the command service Apache to start. Here, fill the password and press. Now we will open the ettercap tool by typing the command sudo ettercap -g. Now click on the tick option. Now click on the
search button to scan the host list. Now click on this button to check the host list, hosts which are available now. Now first we will go to the command prompt of the host machine and will check the IP address of the host machine. We will use the ipconfig command to check the IP address of the host machine. Here you can see that the IP address of the host machine is 192.168.1.9. This is the IP address of the host machine. Now check this IP address in the host list and add this IP address to the target one. Now we will start the ARP poisoning man in the middle attack. Click on OK. Now finally we will go to the plugins option, then click on manage plugins. Now we will click on the DNS spoof to start the DNS attack. Here the DNS attack gets started. Now we will check, open the Google Chrome and type the google.com. Now here you can see that instead of going to the Google page, you are redirected to this HTML page. It means DNS cache poisoning attack is successfully launched. So here you can also see that this is the full information that DNS attack is performing. So this is all about the DNS cache poisoning attack.